Hello, Assalamu alaikum. I'm Zohaib Qazi, and welcome to today's discussion, Music Matters. I am a music producer and a science fiction graphic novel author, and have been an integral part of the Coke Studio team for the past 7 years. So, something that really occurs to me every time जब भी first episode आती है Coke Studio की, a song goes up and I would go online and I would browse through the comments and I'll see that there are people from all nationalities, all languages, people loving one song. And that is the power of music. It's not just the power of one project, but that's the power of music. It transcends on a much higher level. So we have had the likes of Bob Dylan and Bob Marley in the past, to Junoon and Mr. Faiz Ahmed Faiz, Habib Jalib, who have been active voices for social change. And so this is Music Matters के अंदर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उन चीज़ों के ऊपर लाइट डालें. So let me introduce you our panelists. We are going to start with Mr. Taimur Rehman. Taimur Rehman is a lecturer of political science at Lums University, and he is famous for heading another social active voice in Pakistan. He heads the band Lal, and moving from Mr. Taimur Rehman, we are going to go to Mr. Ali Aftab. He's a journalist, and he has been associated with Geo, Dawn Music Group, Dawn News Group, and Pakistan Today. He is now running a production company, and he has also produced an album which speaks of social change, which creates awareness for social issues. Moving from Mr. Ali Aftab, Mr. Yusuf Kirai, he is a mathematician and he is a tabla player, and most famously known in Karachi for heading the Tarz group and educating people on Eastern classical musicology. Lastly, we have Ms. Tina Ji, who needs no introduction. Her career spans over 35 years. Her voice has touched millions and has evoked the emotions of many generations and many nationalities. There's no award that she has not been awarded. So she needs no introduction, Tina Ji. So I think for seniority's sake, we're going to start with Tina Ji. Tina Ji, the basic question of today's discussion: why music matters? Why does it matter? Okay, before I answer that, I need one more award. I need a Nobel. You will. If Bob Dylan can get it, then you will get it too. We need a Nobel in this country for arts and music, because I think pretty much, although we like to think that it's against all odds, I surprise many people when I say that actually doing music in Pakistan has been a pleasure. And it's honestly, and this is not a political statement, I've sung through all the governments since 1980, all of them, including Ziaul Haq. So that should not be that's a lot of surprise for a lot of people. Actually, the guy actually liked music. And yes, he did. We performed for him. There are some Zia fans in the crowd. And, so I think somehow we forget many things. ये भी इसमें से, so हर चीज़ बुरी नहीं होती किसी में. At least as musicians, we never felt harassed by any government, actually. None of the governments. Yes, we now feel a bit harassed by the corporates who are more dangerous, because they वो थोड़ी सी आँखों में पट्टियाँ बांधते हैं और कहते हैं कि ये रेटिंग है तो ये गाना चलेगा और ये नहीं चलेगा, जबकि कौम बिल्कुल डिफरेंट सोच रही होती है. लेकिन आपको वो क्योंकि 100 दफ़ा वो सुनाते हैं आपको, तो दैट एक्चुअली डोमिनेट्स योर थॉट्स. सो बट मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, और मज़ा आता है काम करके. Enjoy every bit of it. So Yusuf, I want you to, moving from Tina Ji, there's a vital point that she had highlighted,
कि आजकल के दौर में म्यूज़िक इज़ बीइंग डन फॉर व्यूज़ एंड लाइक्स एंड लाइक यू नो दिस आई मीन आप रेटिंग्स के लिए म्यूज़िक कर रहे हैं बट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस हाउ विल इट एवर अफेक्ट music on a much larger level in the larger scheme of things, because we'll have to cut through this approach and I mean we are moving towards a black hole at the moment. How do you think we can counter it? Well, I think Tina ji has already illustrated the problem at hand. There's a lot of music going on in Pakistan, a lot, and I'm not just talking about musicians from one genre, let's say classical or folk. In fact, there's a lot going on in pop and jazz. There's many bands, but there now has come a situation where there is only one platform that speaks the loudest. Because it can pump that much money into it, so that one kind of music will be heard repeatedly and repeatedly, and you can't match that. So the problem right now is that we don't actually have enough competition within the corporate world to see how other genres and other experiments are going to work out. So because of that, what ends up happening is that there's this sense, and only in one strata of society, that XYZ is the sound of the nation or the voice of the nation. And the nation is much larger than that. And there's much more diversity. And we're not really thinking about what the locals, the masses, the people in the villages, what they're enthralled to. And which is why it'll take more than just a few folk musicians coming on a popular kind of pop setting to excite the locals. It's going to take a lot more than that. And I think what it boils down to is music education. Until and unless music in whatever form, it could be folk, it could be geet, ghazal, whatever form, it could even be religious music. It needs to come into the schools, and until it does, we won't have that greater representation. So, moving to Mr. Ali, are you aware of any tangible examples music में हमारे मुल्क में that have brought some social changes? कोई social awareness का कोई, are you aware कि एक चीज़ होती है प्रोडक्ट को पुट आउट करना, एक चीज़ होती है अवेयर करना, बट क्या उससे कोई चेंज आया है? आई मीन आर यू अवेयर ऑफ एनी एग्जांपल्स? ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब इस वक्त मजबूरन मुझे अपनी एग्जांपल कोट करनी पड़ रही है. ओके. बहुत अच्छी बात है. As long as it's an example. Yeah. सर, हमने कोई अभी तक गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं की, लेकिन कभी ये हमारा प्लान था भी नहीं. एक चीज़ जो बहुत अच्छा, और जाहिर है बाहर के मीडिया ने, बाहर के न्यूज़पेपर्स वगैरह ने बड़ी इस तरह की भी चीज़ें की कि our song was one of the things that led to 2013 elections. But then again, that is their opinion. It can be right or it can be wrong. One thing which I'm sure of, which you can check, is कि हमारा गाना जो पहला वाला था, उसके आने से पहले किसी पाकिस्तानी अखबार में अंग्रेज़ी के अलावा ना तो डेथ एनिवर्सरी ना बर्थ एनिवर्सरी अब्दुल सलाम साहब की मनाई जाती थी. कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता था, कोई खबर नहीं लगती थी. And these are only Nobel Prize winners. Yeah. और हमारा गाना आने के बाद से हर साल डेथ एनिवर्सरी पर भी और बर्थ एनिवर्सरी पर भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उन पर, ना सिर्फ अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर में बल्कि उर्दू न्यूज़पेपर में भी. उसके अलावा टीवी पर उन पर न्यूज़ रिपोर्ट्स, पैकेजेस बनाए जाते हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. सीरियस डिस्कोर्स का हिस्सा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं थी. हमने जो बात मजाक में की, उसके बाद से वो सीरियस डिस्कोर्स का हिस्सा बन गई. मेरा ये ख्याल है कि होता है, ये आर्टिस्ट का काम होता है बाउंड्रीज़ को स्ट्रेच करना. हर दफ़ा हम थोड़ा सा पुश करते हैं, हर दफ़ा हमारे हल्की सी बात करने पर
वो सीरियस डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाती है. एनालिस्ट्स बड़े बड़े आकर बैठकर उस पर संजीदा गुफ्तगू करते हैं. So now, Taimur, I come to you, and Taimur has made a fascinating presentation on why music matters, actually, or he has covered a diverse range of topics from the Islamic point of view, Islamic kitna music का mention हुआ है, to to examples going back to 200, 300, 400 years. So I give more than that actually. Yeah. Thank you, Zohaib, and thank you to the other panelists. मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूँ, in addition to being a musician, तो मुझे लेक्चर स्टाइल में बात करनी पड़ती है. तो why does music matter? और ख़ास तौर पे तालीम के एतबार से, तालीमी इदारों के एतबार से, यंग लोगों के एतबार से, किसी कौम के एतबार से, किसी पीपल्स या आवाम के एतबार से, why should music matter? आपने ये बात सुनी होगी, अगर मेरे ये स्लाइड शो चल पड़े, अगली स्लाइड, थैंक यू, कि भी इस्लाम में जो है ना मौसीकी वो जायज़ नहीं है. ये एक अक्सर हम इधर उधर बात सुनते रहते हैं, अगरचे आपने बताया कि ज़ियाउल हक को तो पसंद थी, तो मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इन फैक्ट दैट वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री of music within our civilization, not just in Pakistan, not just with Qawwali, not just with the greats that you see behind you, but there is also a long tradition in Persia, in Iran. There is equally a long tradition with the Ottomans. You can see their depictions over here. There is of course in South Asia, हमारे अपने इलाके में तो कहते हैं कि अमीर खुसरो is the father of Qawwali, and also ghazal singing he introduced. He's not the father of it, but he certainly introduced it into South Asia. He introduced many Persian and Arabic motifs into South Asian music, and of course he is the inventor of the tabla and the sitar, or credited with that. He's also the inventor of the khayal and tarana style of music, and of course musicians regard his poetry with great reverence as well, although sometimes not that much reverence, but nonetheless he's a fascinating character in the sense कि अब Alexander पे उसने poem लिखी तो वो 4500 उसके stanzas हैं poem के, जिसमें पूरी Alexander की कहानी वो poetry के ज़रिए सुना रहा है. और आप originally poetry was always meant to be sung. Poetry and music have a very, very close connection. अगला बटन दबा दें जी यहाँ से. So what about music in Islam? क्या वाकई ऐसे है कि इसमें prohibited है, हमें इसे घबराना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं. अगर आप देखें कि scholars ने क्या लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो हराम है, नहीं बजाना चाहिए, मगर ये बड़े बड़े स्कॉलर्स भी हैं जो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, जिसमें अल अरबी शामिल हैं, जिसमें इब्ने कैसरानी शामिल है, इब्ने सीना शामिल है, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अल गज़ाली का नाम किसने नहीं सुना, रूमी का नाम किसने नहीं सुना, इब्ने रुश शामिल है, इब्ने हज़म शामिल है. तो उसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि बेसिकली ये आप देखते हैं इमाम गज़ाली का भी कोट है कि इट इज़ नॉट हराम, इन फैक्ट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, इट इज़ मेंशन्ड इन द हदीस ऑल ओवर द प्लेस. सो बात ये है कि जो पॉलीथियस्ट थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो अपनी इबादत जो है मौसीकी के ज़रिए किया करते थे. तो क्योंकि ज़ाहिरी बात एक ऑपोजिशन थी, तो उन्होंने इस वजह से उस इबादत की ऑपोजिशन की या उस social system की opposition की, but it was not meant for music as a whole for all time to come. That's not the meaning, that was not the basis for his opposition. So आपके इल्म में शायद ये बात ना हो, मगर अल राज़ी जैसे लोग, इब्ने सीना जैसे लोग ये कहा करते थे, और शायद आज कई आप में से भी लोग ये सोचें कि ये तो थोड़े क्रेजी किस्म के थिंकर्स हैं, वो ये कहा करते थे कि म्यूज़िक के इनॉर्मस मेडिकल बेनिफिट्स हैं. इनफैक्ट आप एजुकेशनल और मेडिकल बेनिफिट्स हैं. इनफैक्ट आप देखें कि ऑटोमन पीरियड के अंदर मेडिसिन के साथ जो डॉक्टर बनता था वो म्यूज़िक साथ मौसीकी भी पढ़ता था. उसमें क्या चीज़ें शामिल थीं? उसमें ये चीज़ें शामिल थीं कि उनका ये ख्याल था कि मौसीकी के ज़रिए जिस्म के जो मर्ज़ हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हैं. हैरान कुन बात है. और हर मर्ज़ के लिए उन्होंने अलग-अलग एक राग मुकर्रर किया हुआ, इसको हम राग कहते हैं, वो राग नहीं कहते थे. तो ये उसकी डिपिक्शन है ऑफ ये भी उसकी डिपिक्शन है ऑफ ऑटोमन्स डूइंग म्यूज़िक थेरेपी. पेशेंट को सामने लिटा के उसको मौसीकी सुना रहे हैं. आगे चलें जी. मैं तेज़ जा रहा हूँ क्योंकि इस पर डिस्कशन भी करें. तो एक चीज़ है एजुकेशन पे अब आते हैं. ये तो होगी मेडिसिन की बात. एजुकेशन पे आते हैं. एक चीज़ है जिसको अंग्रेज़ कहते हैं द मोज़ार्ट इफ़ेक्ट.
वो ये है कि बच्चे को जब आप मौसीकी सुनाएंगे तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन आईक्यू की डेवलपमेंट और मैथमेटिकल स्किल्स की डेवलपमेंट में जो है एक इम्प्रूवमेंट आएगी. मैं उसको मोज़ार्ट इफेक्ट नहीं कहूँगा, उसको लोकलाइज कर लेते हैं, विल कॉल इट द तानसेन इफेक्ट. What is that? It is basically, number one, music improves visual and verbal skills. This is not me saying it. ये scientifically साबित हो चुका है आज. वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसको साबित कर दिया. वो बात साबित की जो अल राजी और इब्ने सीना ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कही थी. Studies show that children subjected to music training in basic musical concepts result in enhanced ability to understand words and explain their meanings. Concepts और vocabulary दोनों में improvement होती है. मज़ीद ये studies ने साबित किया है कि बच्चे की IQ में भी इजाफा होता है जब वो मौसीकी सीखता है या जब वो मौसीकी सुनता है. और आखिर में ये कि इवन एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल से भी छोटा हो, वो मौसीकी एक म्यूज़िक रिच इन्वायरमेंट में जब पैदा होता है तो उसकी वो ज़्यादा स्माइल करता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं. मज़ीद ये आप देखें कि म्यूज़िक एक्चुअली हेल्प्स यू फाइट डिप्रेशन. This is clinically provable. It releases dopamine, which makes you feel good. It lowers cortisol, which is the stress hormone. It reduces stress. In fact, it reduces stress so much कि अगर कोई मसाज करें आपका तो उसके बराबर है कि आप 10-15 मिनट की म्यूज़िक सुन लेंगे तो उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल गिर जाएगा. And music can boost self-confidence of young people, fight depression, and it can make an old person feel younger. In fact, Alzheimer's में patients को music सुनाते हैं और उससे उनकी memory recover होती है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ऐਵੇਂ नहीं बोंगियाँ मार रहा. ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव की हैं. तो कितने फ़ायदे मैं आपको गिना रहा हूँ. मज़ीद आगे सुने. फिजिकल फ़ायदे. म्यूज़िक ईजेज योर पेन. लिटरली बॉब मार्ले कहता था वन गुड थिंग अबाउट म्यूज़िक इज़ व्हेन इट हिट्स यू यू फील नो पेन. सो इट एक्चुअली रिड्यूसेस फिजिकल रियल ट्रॉमा एंड पेन. इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस. कोई बंदा जिम जाता है म्यूज़िक ज़रूर सुनता है. क्यों? इट रियली इम्प्रूव्स योर इंड्योरेंस. It increases endurance. It motivates people to work harder. Eye of the Tiger जिसने नहीं सुना वो प्लीज़ एक दफ़ा सुने और फिर उसके बाद उसका मूड बन जाएगा to change the world. It speeds up post workout recovery. It improves sleep quality. It helps people eat less. वज़न भी घटा देगा आपका. It enhances blood vessel function. Amazing. It induces a meditative state. It can improve cognitive performance. It can help people perform better in high pressure situations. It can reduce anxiety. It can help people before surgery. It can help people after surgery. It can help cancer patients deal with stress and anxiety. It can ease recovery in stroke patients. Music matters. The only thing music can't do, perhaps, is that the only thing music can't do is that it can't solve baldness. Nusrat Fateh Ali played his whole life, but he still went bald last. So what I want to say about music is forever evolving. There are many different styles of music. There's no one style which I think is going to be eternal. That's never going to be the case. It keeps sending new messages, messages of love, messages of our feelings, messages of social change, messages of personal feelings, all of those things. I respect and I love all musicians, and I agree with Friedrich Nietzsche when he says, without music, life itself would be a mistake. Music matters. Thank you. Great presentation. So, Tina ji, अगर म्यूजिक इतने फ़वायद हैं, why aren't we? You know, I just loved them or what you just said, because I said, here is a great ad for music. Absolutely a seller. And I think I'd like to add something now that you're on that, which is what I've mostly been very inspired by. एक सवाल है कि जंगल में एक दरख्त गिरता है. Did it make a sound? आपसे सवाल है, बच्चे. If a tree falls in a forest, did it make a sound? How do you say that? You can hear it. Do you know that music and sound is actually recreated in your brain? So if there is nothing in that forest that can translate that vibration, it did not make a sound. Correct? Music is sustained frequency. Yes. ठीक है? And what
जिसको आप म्यूज़िक कहते हैं या जो भी साउंड है, your eyes, I mean, human beings are master translators of any kind of frequency, which is sight, sound, touch, whatever. इसको इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए in terms of, now the question is, why are people scared of music in certain cultures? And why aren't we teaching it at schools? अच्छा, उसकी एक वजह है. Let's now that we've got these young people here who may want to start thinking it in terms of, so what does frequency do to us? You do know what lithotripsy is? It breaks stones within your bladder or kidney or whatever with sound. So sound, actually, even the Big Bang theory is, can you imagine, it's a bang, it's some sort of a sound. Sound is very powerful. I can bring hopefully a tear in your eye, or hopefully not a tear in your eye, by not even touching you. That's the power of sound. Because it is powerful, and because you can't touch it, you can only feel it, it enhances your senses, it puts you in a meditative mode. I can put you in musicians can, when I say I, please read it as we, put you in a meditative state, and this is what we were talking about, and plant an idea in your mind. It can be done, because it has been proven enough that when you're relaxed and you can वो जो mind chatter होता है, musically, if you can put your ear to any kind of sound, चाहे वो AC की आवाज़ है, कोई sustained sound में, अगर आप उस vibration को सुनते रहेंगे, it will start quietening down your mind. That is when the mind is most receptive, extremely receptive to ideas. So hence, it does prove that you can actually subliminally get across a lot of ideas, and possibly one of the reasons why people fear music. People do fear music because it has power. Power to change you, power to make you, it has been clinically proven as well that music sunte hue jab MRI ki unhone, to it lit up every part of the brain. It lit up every part of the brain. So it has that power. So societies where music, if that is your question, I loved your presentation. No, please carry. And I love the concept of frequencies that all of you are in education must find out more for yourself, and especially the young people. Rhythm, because our friend here plays the most gorgeous, has its own frequency and will work on a certain physiology, will work on, rhythm has its own. Do you have Temur? Will you explain the Temur, the rhythm part to us and what it does to us? I think what all of this is making a case for, even more so after the presentation and after what you're saying, is that we need a greater diversity of musical expression in the country. And that's not happening right now because of, I think, the lack of platforms, but also there's a lot of funding going, let's say, into teacher training, on an educational platform. Why don't we actually put some funding into teacher music education? Not student music education first, because you need teachers for it. Absolutely. So let's actually do conferences like this one, but for teachers to learn music. Or curriculum development with curriculum development will be the next stage, but the first stage because is that they've the had practitioners- languages, Yes, Neha. you never let somebody teach your child mathematics that hasn't ever done math before, and so you'd never let somebody teach your child the violin or the sitar if they've never really played those before. So I think that there needs to be a focus on teacher education in the arts in general. I mean, not just music. And I think
one of the things, I mean, I know that there are many genres, many styles, and it's a global village now. But there's something about South Asia, okay, and I include India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. There is something about the music of this soil that still resonates with everybody. Even if they are the burger crowd, even if they are from the villages, even if they've had no musical exposure to Eastern music or South Asian music, it resonates with us. And the unfortunate thing is that we keep trying to set that aside. Corporates do it all the time. अच्छा ये तो आपका जो ये है वो क्लासिकल राग वाग शाग होगा, ये नहीं हम वो ज़रा यंग ऑडियंस चाह रहे हैं. जब यंग ऑडियंस उसको सुनेगी ही नहीं तो वो थेरेपी कहाँ से होगी जो आप जिसकी बात कर रही हैं, क्योंकि वो थेरेपी आई एम सॉरी वो कोक स्टूडियो से नहीं होगी. जो अल राजे की बात है वो उसके लिए और किस्म की म्यूज़िक चाहिए होंगे. सिर्फ एक कोक स्टूडियो नाकाफ़ी है. वो कितना करेगा? बहुत बोझ उठाया है कोक ने अपने आप पे. See, I mean, in Coke Studio's defense, honestly, I think Coke Studio has managed. I mean, yeah. It's one platform. Again, it's a great platform, yeah. but it's one platform, and I'm making a case for there to be much more. And we cannot rely on the corporates. That's our problem. Yeah. We want somebody to fund us all the time, and that was the old musician sentiment. कि ये रजवाड़े गए तो सरपरस्ती गई. We've got to be creative, and we need educated musicians to be that creative, so that you're using music and mathematics and the sciences and all of that within your discipline, so that you can actually raise your own funds. You can do crowdfunding from the internet, but for that we need many more. Actually, when you talk about education in schools, in music, I often think about it. एक तो ये कि I think not everybody can do music. Just like not everybody can do maths. So you can't really push it in a school and say कि आप सबको music पढ़ाएं, लेकिन choice देना बड़ी ज़रूरी है. But we do push math on everybody. Absolutely we do. And we do push science on everybody. Absolutely we do. And we do push everything else. And you know what? And that is one of the reasons why in West there's more musical sensibility as compared to. I'd like a class. Ideally like to have a class in every school, which is music appreciation. Yes. Music appreciation. Because we need listeners. In defense of Coke Studio, this is your youth which lapped up the music that came out of Coke Studio, and that was all. Yes, we've been doing this fusion of Western music and rags for the longest time. It was beautifully produced and people loved it, but it was the music of the land. And so, वो केस तो है ही नहीं कि लोग नहीं enjoy करते पाकिस्तान की music. पठान भी जो है वो अपने रेडियो को बड़ा dress up करके रेडियो सुनता है. He loves his radio, if you ever go that way. But I truly agree with Yusuf 100% that there's got to be a syllabus like Mr. Bhatkhande did in the 30s in India. आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम इंसान के पास म्यूज़िक नहीं थी. आम इंसान ये सिर्फ घरानों के पास म्यूज़िक होती थी. किसी को एक्सेस नहीं था म्यूज़िक का. एक भातखंडे साहब थे जिन्होंने कराची में 1 साल कराची हाई कोर्ट में भी नौकरी की है. उनको एक शौक़ चढ़ा कि ये अंग्रेज़ चले जाएंगे तो फिर इसका कौन ख्याल रखेगा. एक काम करता हूँ, सारे हिंदुस्तान के जितने घराने उनको कहता हूँ कि अपनी एजुकेशन हमें दें, इंफॉर्मेशन दें कि भाई क्या राग है. उस पे उन्होंने सारी नॉलेज को इकट्ठा किया. 30s की बात कर रही हूँ, तो इतना पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत पुरानी है. लेकिन फिर भी टीना जी फोक तो था ही ना. अच्छा, तो लोगों के पास पाकिस्तान में जो आपको अगर कोई आइंदा सवाल ये पूछे कि वाई इज़ देयर नो क्लासिकल म्यूज़िक इन पाकिस्तान, उसका आसान सा जवाब ये था कि जियोग्राफिकल बाउंड्री जो पाकिस्तान की है उसमें कोई घराना नहीं आया जहाँ से ये सब म्यूजिशियंस निकलते थे. घराने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पुप्पी का बेटा, खाला का बेटा, वरेवर, या सीखने वाले समझने वाले, वहाँ से वो उन ख़ानदानों को
कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता था घरानों का। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल, आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान था सवाए पंजाब घराना जो तबले का था, जहाँ से, और अगर आप कसूर को समझते हैं, बट लेट्स गेट इट, तो जितना भी जो म्यूज़िशियन आए हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, वो एज मुस्लिम्स आए, पहली बात ये। दूसरी, अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे, जिसमें कि उस्ताद नज़ाकत सलामत, उस्ताद अमानत फ़तेह, रोशनारा बेगम, उसके बाद चलिए जो 8-10 लोग आप गिनना चाहते हैं गिन लें। ये एक बबल की तरह हम इनको सुनते रहे, मगर इनके साथ ज़रूरी नहीं था ये 2-2, 4-4 लोग आए थे, घराने नहीं आए थे। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। घराना तो बड़ा एक बेड होता है जिसकी ज़रा आपको एक्सटेंडेड फैमिली चाहिए होती है। लेकिन बट पाकनी में एक बात कर रही हूँ, व्हाट कोक स्टूडियो प्रूव टू अस, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान जब बना है और जो एक बहुत पर्शियन सेंट्रिक, अरब सेंट्रिक, मुग़ल सेंट्रिक, हमने क्योंकि इसी बेसिस पे ये मुल्क बना था, तो इसको जो चलाने वाले थे, जो माइग्रेंट्स भी जो आए थे, वो एक अपनी परंपरा लेके आए और उन्होंने कहा कि यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये पेशावर में क्या म्यूज़िक है, बलूचिस्तान, वो जो एक पेंडू वाला जो एक था वो सिंध को भी मिला, वो पंजाब को भी मिला, लाहौर में, लाहौर गढ़ था, लेकिन यहाँ आते थे और एक शहर था, यहीं से चले जाते थे। मगर अगर आप इनर पंजाब की बात करते हैं, सिंध में ग्वालियर के कोई बहुत पुराने लोग सेटल हो गए थे, गाने वाले, जिनको कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स लेके आए थे। हेंस आप अगर आबदा परवीन जैसे लोगों को सुनते हैं तो वो उन ट्रेनिंग्स का हिस्सा हैं जो कि ग्वालियर घराने के कुछ लोग वहाँ पे आज भी मौजूद थे। ये सारी जो माइग्रेशंस होती हैं, इसमें चेंजेस बड़े आते हैं। मुल्क बहुत यंग है। पहले तो तुफैल नियाज़ी साहब दूध दही बेच रहे थे मुल्तान में। तुफैल नियाज़ी साहब दूध दही की दुकान लगाई थी मुल्तान में। एक बंदे ने उन्हें पहचाना था और उन्होंने कहा था आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं हुणे ही आया हैं, तो बच्चे बड़े छोटे ने, तो समझ नहीं आ रही कि मैं की करा, तो इधर तो कोई नहीं जानता सानू, बिकॉज देख पंजाब का तो पार्टीशन ही पूरा हो गया था। तो फिर उन्होंने उनको वो थाने से कोई जो म्यूजिशियंस चले गए थे मुल्तान से, उनके इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे कि तुफैल नियाज़ी साहब की कर रहे हो, तुसी ये काम छो। सो हम लॉट हैज़ बिन लॉस्ट, जिसमें कि कोई म्यूज़िक अलग चीज़ तो थी नहीं, मतलब कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, वो वाली बात है। नहीं, लेकिन एक मिनट एंड देन आई विल एंड दिस। व्हाट कोक स्टूडियो इंटरेस्टिंगली डिड, कि बजाय ये कि वी वर बीटिंग आवरसेल्व्स ऑन कि यार क्लासिकल म्यूज़िक पाकिस्तान में नहीं है, एंड वी वर, आई वाज टंग टाइड अबाउट इट टिल आई रियलाइज दैट आई वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन in a country where there were very few representatives to teach us. So when people now today tell me कि जी क्लासिकल म्यूज़िक स्कूलों में होनी चाहिए, मैंने कहा चुप कर जाएं, टीचर कहाँ से लाएंगे? Because classical music is like physics, it's like maths. You need a trained person. I can't tell a teacher and tell her कि आप ज़रा आपने देखना है इसको कि ये फलाना जो राग है इसमें जितनी परम्यूटेशंस हैं वो इसको जाने। सो इट्स अ टेक्निकल मैटर, वी नीड टू वर्क ऑन इट। बट देखिए ना, जब तक until dabbling in music is not going to be okay, even if on an experimental level, देखिए पूरी इंडिया में इंडिया we say देखिए ना, इंडिया में महाराष्ट्र में there is अभंग, मराठी अभंग, बंगाल में बाउल सिंगिंग, these are all folk forms. इंडिया में इंडिया never moved. साउथ इंडिया में देख लें। अच्छा, इंडिया never moved. नहीं, all I'm saying is this. They had a great system going even though we together. Move, we have our folk. What I'm saying is this, that we don't, I'm not even saying that we have to have a classical foundation. Yeah. I'm not saying that. I'm just saying in a place where music is generally absent as an experience for everybody else. But I think that's where her term music appreciation comes in. Yeah. कि आप म्यूजिक हर किसी को सिखा नहीं सकते, मैं कहती हूँ folk music सिखानी करना चाहिए। जरूर सिखा सकते। Can you do a math appreciation class? Can you do a geography appreciation class? In fact, that's what they become.
You see, you have to So see, experience so- it. so Even see- if you're bad at it, it doesn't matter. All I'm saying is this: you need the bad musicians to recognize the good ones. So you need people to at least have had some experience with it. Okay, They may not pursue it. on this point, so see, the world is moving towards volume productions. आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे we are limited to sharing our point of view in 144 characters. हम लोग को tweet करना होता है 144 characters के अंदर. आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आपको 15 second में Instagram story से किसी को impress करना है. Yeah, you're actually battling with the audience. That's actually that's actually swiping through content. मेरा सवाल है और ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि और आप सब लोगों से है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट जब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे एक फर्स्टली तो हम लोगों को म्यूजिक एप्रिसिएशन इज द फर्स्ट People need to hear all kinds of music. Music appreciation West में पढ़ाई जाती है. आसान तरीका होता है उसमें उनको instruments बताते हैं. Any teacher can be taught to do that. That's when the kids start to listen to different kinds of music, and then that is the time when they say, hey, I like the sound of the tabla. So where do I learn it from? And that's when you go into a master's level where they'll find probably Yusuf. But the point is, Yusuf, they need, first of all, for instance, Coke Studio, the reason it became so popular was because the land by itself was being represented. The kids were listening to the Qawwali. आप देखिए the genres जो But Tina ji, the problem is, and I'm sorry to say this, that Okay. No. Let's not make it about I need Coke to say Studio. this. I need to say this because topic look. Music is not just about lyrics and vocals, and I need to put this out there. It's about a lot more, and So there's see, a lot of instruments. Hold on. When's the last time that somebody will tell you and come up to you and say, who is that tabla player on Coke Studio? Who is that? I need to know, oh, I'm interested in this instrument. It's because there is a certain packaging that and it's because of whatever demands of the company, that's fine. All I'm saying is that's one packaging. And there needs to be a lot more. There needs to be, you can actually have classes with little kids where you're just talking tabla language. Yusuf, देखो दो चीजें There's no meaning to it. नहीं. I'll have to jump in this discussion. The thing is कि you need to understand that Coke Studio has become that bridge जो कि आपको आज एक चीज renew करके देता है, and then you go back to listening the old one. It doesn't happen. I'm No, sorry, a lot of it does kids not wind up happen. happening. That, yeah. I'll go to EMI, ask EMI people, their listenership has gone up. Okay, EMI person himself told me that. Okay, now Of course he'll tell you that. He's an EMI person. Because the listenership has gone I'm up. sorry. This is a I'm telling you big by figures. misunderstanding. Maybe we can move to another subject. Aside Yeah, from Coke Studio. yeah. No, नहीं, it's नहीं, important. This music matters for a reason. We have to talk about the matters of music. Let's talk about it. So what I'm trying to tell you is that for Eastern music to win, another platform doesn't have to lose. You Yeah. know, It's they can not a keep doing their battle. own It's thing. not a battle. Like I said. So see, Bob Dylan and John Mayer will always remain different, and Bob Dylan is still doing his thing. John Mayer is filling arenas. I don't see why my point is making you feel like I've got anything against any studio or anything like that. I'm just saying that there just needs to be more of different kinds of Government music. initiative. Government should Yeah, take be it on a initiative. government level, be it on the private level, like the But Beacon House Yusuf, systems. having said that, when I started doing the kind of music I do, in which Taimur and I will both, because we do the same kind of music, I think I went into it absolutely. I knew that iski listenership shayad itni nahi hogi, but I had the passion to do it. And I think we all know from the times of Amir Khusro, who was a pop star of his time, by the way. He was. Because in a very funny twist of things, if we know that Carnatic music was used as the basis of what we now know as North Indian classical music, right? The Carnatic music or the South Indian music was the music of the temples. And the Mughals and all that, we're not going to go to history, and you guys know that, brought their styles from all over
the Arab world, the Persian world, and whatever, and the amalgamation became known as what we know as North Indian classical music, which is what we have in this land. The tabla you play must be a real pop thing at the time when the mirdangam was there, because although I think it was brought from Iran, wasn't it? Tabla, tabl was an Arab. It's a contortion of the term, and in fact, even the Tabl fact would that be an Amir Arab, Khusro invented it is not something that is historically proven, because the first No, it ever, isn't, yeah. it's so I think more is, Amir Khusro invented tals, which are beat cycles. Actually, a lot of people are aware of the word tal, and they'll say sur tal, but a lot of people probably don't even know that So it's coming was from the word North tal. Indian classical music Islamization of music? Well, I'm going to tickle you guys here. Because that's what the references were. A lot of rags still are not sung, which are based on the very Muslim. But this was a movement in Pakistan to change rag names and. And in India, in some parts of where Darbari is not possibly the best rag anybody wants to, because they're more into it, because they're There's a bigger steeped palette. into. There's a bigger yeah. palette. You see, there's So- a bigger palette. We had a problem with Yeah. Shiv Kalyan and Chankara, but there's a bigger palette out So here's the difference. Can I just tell a little story? Or am I overshooting my time no, here? please Okay, so it's a story. I don't know, but it's a lovely little story and give you an example of how styles can change and diversity can happen. And there is North Indian classical music, and there is this wonderful sound. They live side by side. वो एक दूसरे को arrows मारते रहते हैं. But there's a story where Akbar asks Tansen कि भाई तुम्हारे उस्ताद जो थे वो भी तुम्हारी तरह ही गाते थे, क्योंकि you're the finest. So Tansen is supposed to have said कि आपने सुनना मेरे उस्ताद को. So he takes him, 3 दिन की कोई जर्नी पे लेके जाते हैं उनको, तो रात को सो जाते हैं. सुबह में Akbar wakes up to the most beautiful sound of singing. And so he wakes up and there's Tansen hiding behind a wall, and there's Akbar, and he says ये मेरे उस्ताद जो उनके जिनसे तानसेन के. तो तानसेन कहता है कि अकबर कहते हैं कि तुम अपने उस्ताद की तरह क्यों नहीं गाते, बिकॉज ही इज़ हेवनली. तो कहता है डिफरेंस है, ये खुदा के लिए गाते हैं और मैं इंसान के लिए गाता हूँ. So, there are stories, but it depends, coming to the quality of music today, receiver पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि who's receiving this music. So popular trends will always be homogenized. There'll always be lesser diversity in popular music, always, because उसका मतलब ही ये होता है कि everybody think the way we think. आपकी diversity को वो इतना celebrate नहीं करते हैं ना. That's the popular culture. It is like everybody, let's stand on the same platform and think the same way. To me, that's why everything sounds the same across pop music in Japan, down to Korea, to anywhere in the world, will sound the same, and that's fine. इसमें से अगर आपने diversity ढूंढनी है, so corporates enjoy the fact कि diversity, क्योंकि अब उन्होंने एक brand बेचना है आपको. In this case, it can be Coke, it can be Supari, Chalia, or whatever. It's or better Pepsi. that everybody's on the same So page. वो फिर ये है कि आप सब अगर एक ही पेज पे हों तो बेहतर है, क्योंकि फिर सब. But I think लेकिन सोच को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी वीडियोस करती हैं. So, I mean, we're moving towards the end of our discussion, then we'll move to the question answer session. But I would like you guys to say one line why music matters. Starting from Taimur Rahman. Well, I think music matters for several reasons. जैसे मैंने highlight किया है कि it impacts you emotionally, physically. It also plays a very important part in identity formation of any society. Thirdly, it tells the story of who we are, where we came from, who we are today, and where we want to be. For all these reasons and more, I think it is the refinement of one of the senses that has been given to us, the sense of hearing. Any refinement in that
in turn refines the person. So I think music matters enormously for education, for the country, for people, as well as for the individual. So, Ali, why music matters? म्यूज़िक मैटर्स क्योंकि जिस काम में भी आप अच्छे हो वो आपको करना चाहिए. हम क्रिकेट में अच्छे थे लेकिन वो दुनिया खेलती नहीं है. 8-9 मुश्किल से मुल्क है, इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होता. जिहाद में हम अच्छे थे, वो हम नंबर 1 हो गए हैं उसमें, लेकिन अपने बड़े बंदे मारे जाते हैं. तो हाँ, Okay. इसमें ज़रा कैजुअलिटीज़ कम है म्यूज़िक में. That's Mr. Kirai. Ali Aftab's wit is unmatched. I tell you, fantastic. Mr. Kirai, besides corporates and besides Coke Studio, why music matters? Well, after that slideshow, I don't think it's a moot point for me to answer that question. I think that point has already been kind of put across. I'll just say this, that for all those of you out there, आप लोग की रस्में होती हैं, आपकी शादियाँ होती हैं, आपके बच्चों की बर्थडेज होती हैं, आप शायद गाने लगा लेते हैं सीडी पे, ये वो. थोड़ा सा ख्याल कर लें, म्यूजिशियंस को बुला लें और उनकी सही से ट्रीटमेंट करें, उनको सही पैसे दें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको टीवी पे, यूट्यूब पे सिर्फ वोकलिस्ट नज़र आएंगे और साज कोई नहीं होंगे. True, I agree with that. कोई नहीं होंगे साज, सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा. यहाँ तक कि सारा म्यूजिक हो भी चुका है. अब तो बल्कि मैं उस दिन गौर कर रहा था, एक आबिदा परवीन का ट्रैक था जिस पे मैंने कहा ये तबला इतना रेगुलर, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है. पता चला कि वो नहीं, वो एक्चुअली वो एक ड्रम पैड पे उन्होंने एक तबला का सिमुलेशन है उनके पास, तो वो बस आप कार्ड डाल दें, वो ठेका बजेगा, ज़रूरत है. लेकिन तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत गुंजाइश है म्यूज़िक में, क्रिएटिविटी की और बहुत सी चीज़ों की. तो आप थोड़ा सा म्यूज़िशंस की तरफ भी ध्यान दें. वो जो काम करते हैं बहुत अहम काम है. वो असल में तो सिंगर को वो बनाता है. आप किसी सिंगर को आप अकेले खड़ा कर दें, बहुत मुश्किल है मूड बनाना. बहुत मुश्किल है. बल्कि वेस्ट में तो इतना सारा म्यूज़िक, यूसुफ आप जानते हैं, यूसुफ आप तो जानते होंगे कि वेस्ट में तो इतना सारा म्यूज़िक जो है वो वोकलिस्ट के बगैर होता है. क्लासिकल म्यूज़िक भी इतना सारा वोकलिस्ट के बगैर होता है. सो आई टेक योर पॉइंट. मैं तो खुद एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ मेनली. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड. दूसरा इसमें इसको म्यूज़िक को संगीत कहते हैं, और संगीत इसलिए कहते हैं कि ऐसा काम जो संगत में हो. तो उसमें एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन भी आप अच्छा ना गाओ, तो गिटार वाले थे या तबले वाले पाते हो कि तू बेसुरा बजाई जा रहे हैं, मेरे खराब करता. अगर पीछे पहली नज़र तो या तो तबला प्लेयर पे या गिटार या साउंड वाले पे, या साउंड वाले पे. अगर पीछे सारा कुछ डिजिटाइज्ड 440 पे चल रहा है और उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है खराबी की, तो फिर तो सारा मुद्दा मेरे पे आएगा जो कि नहीं मैं लेना चाहता. हाँ, एक और मर्ज निकल आएगा उसमें से. अगर आप ऐसा म्यूजिक बनाएंगे ना जो बिल्कुल डिजिटल होगा, फिर वो बीमारी के लिए आपको फिर और म्यूजिशियन पैदा करने पड़ेंगे. ओके, टीना जी, आपने मुझसे एक बहुत खूबसूरत बात की थी जब हम लोग लाउंज में बैठे हुए थे अबाउट डाइवर्सिटी. इफ यू कैन गिव अस अ कंसाइज वर्जन ऑफ दैट, बिकॉज़ वी हैव too many questions. The thing is, honest to God, let's not make. To me, if music appeals to you, makes you feel good, ये जो compass है ना यहाँ पे of feeling, I think don't lose that. As younger people, you have that. हम लोग तक वो तोड़ ताड़ के society ने उसका कबाड़ा कर दिया होता है, that we end up saying the things that are correct politically. So if you feel good when you listen to music, then music matters to you. And if it doesn't, that's all right. It's not the end of the world. Because I don't think we are out here trying to sell you music. I think you're all here because you're curious. You are, if you like music, there is enough diversity in the world. For God's sake, now with the internet, you think anybody can force music down your throats. They can't. If I don't want to listen to Coke Studio, I don't have to. There is a thing called a remote. You change it. And I think that is where I'm able to listen to, and you can
listen to music from all over the world, and I think itni diversity मैं honestly देख रही हूँ. Our own children are listening to music from Iran. They're listening. I did a Rumi thing on Coke Studio. On a song that I grew up listening to by Madame Gugos, Manamedam. तो उसका एक हमने riff लिया था, and you know, it was full of it. We've heard this, and then they went and they said ये कहाँ सुना हुआ है, and lo and behold, you know, so they were bringing out कि अच्छा this part is from. So I think what is happening today is कि वो जो एक one channel life हमने गुजारी थी PTV की, जिसमें जो कुछ हो रहा है वो हम समझते थे रिफ्लेक्टिव है ऑफ द सोसाइटी, वो चेंज हो गया है. पैराडाइम्स हैव शिफ्टेड. सो नाउ हम घबरा गए हैं. हमें नहीं पता कौन सुन रहा है. हमें ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मुझे कौन सुनता है. पहले मुझे पता होता था कि चैनल चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं मुझे. अब मुझे एक बच्चा 12 साल का, हाँ, आपको पूरी दुनिया सुनती है. ये मुझे नहीं पता पक्का, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है. बड़ी अच्छी बात है, because now I'm not playing to the gallery, you know. Anybody, I mean, a young kid can walk up to me, and I do get very, I feel very, it's a huge compliment when a young person comes up to me and say, because I'll turn around and say, you know me? Because when I did Coke Studio, a lot of people said, we didn't even know you existed. But that's fine. I really think art needs to get out to you guys. That's why we do it. I do it because I love music. And I just cross my fingers and pray that you like it too, but I can't. You know, one of the finest things that I heard, I cannot force you to like my music. There is no forcing in culture. None whatsoever. Culture is lived. You like somebody or you don't like somebody, that's a choice that I as an artist need to live with. It does not matter. मैं लाख अपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हीरे जवाहरात भी पहन के आ जाऊंगी, but it doesn't matter. The thing is, if I connect to you or I don't, that's a choice you hold, and that's something that I have to live with. Yeah. Thank you. So we are going to move with move towards the question answer session. Oh, we have a question answer. We'll have to keep it concise because we are short on time. We don't know how to be concise. हमारे अलाप बहुत लंबे होते हैं. Lekin, let's try to keep it between 30 and 45 seconds. Okay. What sort of music can be therapeutic and what can be torturous? Examples, What? please. What kind of? What sort of music can be therapeutic Let me give you an example. and what can be torturous? Examples, please. Mr. Taimur Rahman will answer that. It's very subjective. It's It is what very you think is therapeutic. Why should I answer that for you? Here's some therapy. Whatever works for you. दीप जिसका महला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. That's therapy. Great. So, for Mr. Ali Aftab, Rafia is asking what factors are responsible for the decline of the music industry in Pakistan? How can we remedy it? Take a deep breath. डिक्लाइन पाकिस्तान में सिर्फ म्यूज़िक का तो नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़ का डिक्लाइन है. तो म्यूज़िक फड़े तुसी जानते हो ना, सी नजर आने हैं. म्यूज़िक तो एक चीज़ है, मतलब आप ये देख लें जो और कौन सी चीज इतनी? नहीं मतलब आप एवोल्यूशन देख लेना कि मतलब टीना आपा के बाद हम लोग आए हैं. तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ That थिंग्स, answers your म्यूज़िक question, की, Rafia. हर चीज़ की. So, we will move to, for Mr. Yusuf Kirai only. Do you consider the rap genre to be a type of good music treatment or just classical? Actually, It's not direct towards you, but I'm directing it towards sure, you. it's actually a perfect question for me. Rap actually has more in common, believe it or not, with tabla than a lot of genres in Western music, because rap
is not only a play of words, but it's a play of words within time. So, dagina dachake dhikite dagina dachake dhikite dhingi dinagina dachake dhikite gina dagina dachake dhikite dhingi dinagina. Yo, 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 but you know, I don't know rap, but I mean, that's basically what it is, right? Do you have this on camera? Yeah. This time somebody has it on camera. अब ये चाला चल रहा है धा गिन दा गिन दा के देखिट गिन तिना गिन दा के देखिट गिन दा के देखिट गिन तिना गिन ता गिन दा के देखिट तिंग तिन दा के देखिट गिन दा के देखिट दिंग दिना गिन दा अब देखिए कितने मिजाज बन गए एक ही लाइन में। इसमें ना कोई मतलब था। I didn't even need to resort to profanity to attract your attention because in this, the music of this soil, there is already power. You sing, Oh Lal Meri Pat Rakhiyo Bala. You sing it in the Western format, you'll kill it. You have to invoke the in-between. Oh Lal Meri Pat Rakhiyo Bala Jule Lal. That's why Yusuf Kirai is Yusuf Kirai. So just like that, we need, so there's actually a lot of potential for fusion that way, but fusion should have, from Pakistan, a platform that is Eastern, and then the Western ornamentation comes in. It's the reverse right now. Okay, Tina ji, why is a person called Mirasi when he hears music? Oh man. Okay, we need another hour for this. Okay. 30 seconds. मीरास फारसी का लफ्ज़ है और बुरा लफ्ज़ नहीं है। मीरास जिस चीज़ की भी आपकी हो, फैमिली बिजनेस की, तो आप मीरासी कहलाए जाएंगे। तो वहाँ से निकलता है। अच्छा, अब मरासी कहाँ से निकला है? देखिए लफ्ज़ों में एक फ़र्क है। And that has a lot to do with perception. I want to go, we can't go deeper into it, but the thing is that the entire power of music, the way it was exercised, और वो जो तानसेन की कहानी थी ना कि वो खुदा के लिए गाते हैं और मैं इंसान के लिए, वो फिर उसकी देखिए किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रास्ट अगर आप लें तो there is no end to it. Anything can be pornography to absolute sublime literature. So there is these amazing two sides of the same story, and I think that goes for music as well. सिर्फ ये है कि कितनी अजीब बात है जब आप खुश होते हैं तो आपको म्यूज़िक याद आती, तो तुसी उन्होंने मरासी कहते हो, तो वो थोड़ा सा एक वानबी नवाबियत अभी थोड़ी सी निकल जाएंगे, 20, 30, 40 साल के बाद ये भी निकल जाएगा हम में से, और हमारे ही बच्चे इस म्यूज़िक में आ रहे हैं. I was the first generation musician in my family, and my son, I hope, is going to be another musician. And it's sacred and revered in my house, और उसका गिटार वहाँ पड़ा होता है जहाँ मेरा हारमोनियम होता है, और हमारे घर में म्यूज़िक के साथ मजाक नहीं किया जाता. So I think all of you, if you start having that kind of respect for music, तो ये लफ्ज़ जो है ये redundant हो जाएगा. ये इस्तेमाल किया जाता था उन छोटा सा कोई बंदा, वो भी पता है म्यूजिशियन हायर कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है, and it's powerful. तो going back to कि ये क्यों था, then you're going to have to read history कि generals क्यों थे और assassins क्यों थे, और every subject is two subjects. So probably our last. मैं क्योंकि शेख घराने से हूँ ना, तो हमें बचपन से बताया जाता है कि आपने शर्मिंदा नहीं होना कि आप कंजूस हो, ये आपकी मिरास है. फख्र करो. Okay, last couple of questions. We have to do it a rapid fire. Okay, 20 seconds. Come on. In our country, music is still considered a bad thing. If Islam allows it, please prove it with the direct reference of Holy Quran
and Holy Prophet, not with a reference of Ibn Sina. 20 seconds. What? 20 सेकंड सिंपली ये है कि हज़रत दाऊद जो थे वो प्रॉफिट थे और वो खुद मौसीकी करके अपनी प्रोफेसी सुनाते थे लोगों को और ये कुरान में इसका जिक्र है. Okay. Question number 2. According to your views, is a mix of Eastern music into our cultural music beneficiary for our society? Is our cultural value being depleted? Yusuf Karai, 20 seconds. Is our cultural value being depleted? Absolutely. In fact, 20 we seconds. are usually, especially when our children go abroad, they have nothing of Pakistan to represent, very little actually. And music is such an important part of our cultural heritage that it's a shame that we don't have that kind of representation. So Probably one of the last questions. The radio doesn't play anything that's not popular, and it doesn't. And underground artists get gigs or radio play. They don't get gigs or radio play. I don't understand it. Okay. It's a note from a 13-year-old. That's why I'm going to read it. I'm not biased. I'm Mazen, a 13-year-old boy. I heard the Coke Studio song Ki Damda Bharosa, but when I heard the original song by Noor Jahan, I fall in love with her. I want to also There you include are. that There when my you are. Nana were in his last days, were passing through his I last like days, he you. used to hear What's your Noor name? Jahan. And you went and heard the original. There we are. There we Yes, are, the transition. Okay, so all of these are requests for Tina ji. आप choose करिएगा. Respected madam, please sing Bahar Aayi. For Tina, please ask ma'am Tina ji to sing something, some verses. कोई बात करो, Tina ji, please. Request for Tina Sani, please sing any of Faiz's Kalam. Okay. And before you sing, Yes. in 20 seconds or less, who do you owe your success to? My father. Great. Okay. That's Twitter-friendly answer. Okay, let me tell you what this. कोई बात करो. या मैं आपको इतनी लंबी कहानी देने लगी थी बाहर आई की. अच्छा, there is a Carnatic. Okay, so you know what happened? Rag Durga is a very South Indian rag. And because the name Durga is a Hindu deity, तो जब पाकिस्तान बना तो एक यहाँ पे मैं नाम हिस्टोरिकली when it started जब इन्होंने रेडियो टेलीविज़न पे तो उन्होंने कहा कि भाई वो जितने ऐसे राग हैं जिसमें हिंदू देवताओं और देवियों के नाम हैं वो तो हम अनाउंस ही नहीं कर सकते तो वो आप गाएंगे नहीं तो बड़े राग गाए ही नहीं गए टेलीविज़न पे. I remember when I heard, my father heard Rag Durga from Ajoy Chakravarti, and he called up, Arshad Mahmood was doing a composition, and he said, Arshad, tenu Durga pata hai? तो Arshad, I think managed कि सर मैं ना तो सुनिया पर मैंने नहीं अन्ना पता कि यार listen to this and why don't you compose something in it, and that's how Bahar Aayi came about. And so one day I was sitting somewhere and somebody mentioned to me as to, you know, why it was the most perfect rag for Bahar Aayi. So it has a little bit of Bahar Aayi. कितना मुश्किल होता है वैसे एकदम से गा लेना. आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे. So this is, And you heard it in the World of Tomorrow conference by Beacon House only. what? कोई बात Okay, करो कोई कोई बात बात. Okay. इतनी तो बात की है. लड़ लड़ के हमने म्यूजिक आपको बेच बेच के हम तक गलकान हो गए. कोई बात करो कोई बात करो कोई खुशबू जैसी बात करो
कोई बात करो. Wow. Okay, that's a wrap for our panel music.